Hello boys and girls. We started with the alternating current yesterday. Hope you have attended the lecture, and I'm going to give you another one today. When the current is alternating, it is difficult to find the charge or the heat being produced or the current because it is varying with time. And if we have to determine the charge or heat produced, we must always use integral calculus. To avoid doing that, what we have done is we have calculated the average value. The average value of current is that constant value of current which sends the same amount of charge in half cycle of AC as is actually being sent by an AC in the same time and through the same circuit, and it came out to be for an variation of I equal to I naught sin omega t, it came out to be 2 I naught by pi. वो थोड़ा सा एरर हो गया था, but the end result was okay. वो ओमेगा टी वो देख लेना आप, ठीक है. Then to determine the average value of current, to determine that constant value of current which produces the same amount of heat in one full cycle of AC or half cycle of AC, as is actually being produced by an AC in the same time and through the same circuit, we use root mean square value of current. And it is the root mean square value of current which is more important, because if the voltage is varying and we say it is 220 volt AC, अरे भाई क्या मतलब है 220 वोल्ट AC? इसका मतलब है ये इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है. इसका मतलब है कि ये वैल्यू वेरी कर रही है फ्रॉम 0 to, and that is for a variation of I is equal to I naught sin omega t or E is equal to E naught sin omega t. The root mean square value is E naught by root 2, or the current is I naught by root 2. Thus, if we say we have a current of 5 ampere AC, it means its peak value of current is I naught by root 2 for a variation of I naught sin omega t. Not always. Not always. आज मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा in which we determine the root mean square value of any variation, including I naught sin omega t, और वो भी जल्दी. इसी को हम कहते हैं कंसेप्ट. कंसेप्ट वाइज आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालनी है. टू फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर अ certain variation. पहले I is equal to I naught sin omega t. इसी की कल डेरिवेशन की थी, पर छोटे से तरीके से करता हूं आपको. Using integral calculus, we will determine the heat being produced in a half cycle, in one full cycle. H is equal to I naught square integral of sin square omega t dt from 0 to t, and this will come out to be R I naught square R into t by 2. This is the actual heat being produced in one full cycle of AC. डेफिनेशन मेरे को पहले ही मालूम है, आर्टिकल आए तो लिखनी पड़ेगी, बट दिस इज हाउ इंटीग्रल ऑफ sin square omega t dt from 0 to t is t by 2. This is the actual amount of heat being produced by an AC of this variation. Let IB be that constant value of current which produces the same heat in the same time. One full cycle के लिए करना, तो ये कट गया आपके पास और आई भी आ गया I naught by root 2. यही वेरिएशन है जी, ये आपकी RMS वैल्यू आ गई. Let me
have another variation. आपको एक ग्राफ दिया होगा, ये जो वेरिएशन है ये वेरिएशन ये वेरिएशन I T T by 2 T। अब जो वेरिएशन है वो कुछ ऐसे so this is 2 amperes, this is minus 2 amperes, this is T by 2, this is T, this is T. Thus the current is varying from 2 amperes to minus 2 amperes. For half a cycle it remains as 2 amperes, for another half cycle it remains as minus 2 amperes. What is the RMS value of current? अब आंसर 2 by root 2 नहीं है। अब समझ आई बात कि ये जो वेरिएशन है सिर्फ ये वेरिएशन है। I will go by the theory. I will determine the actual heat being produced by this variation. 2 का स्क्वायर इंटू R इंटू T by 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इंटू R इंटू T by 2। ये कितना आ गया? 4RT by 2 is 2RT plus 2RT 4RT। This is the actual heat being produced by this variation. He says ऐसा भी कोई कांस्टेंट करंट है जो यूनिफॉर्म रहे इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और इतनी ही हीट प्रोड्यूस करे इतने टाइम। Therefore 4RT is IV, कहता है IV एक ऐसा करंट है IV square R into T। IV is 2 amperes। Very interesting। अगर 2 amperes का कांस्टेंट करंट होता तो वो उतने टाइम में उतनी ही हीट प्रोड्यूस करता। पता क्यों? जनाब करंट 2 एम्पीयर है या माइनस 2 एम्पीयर है, डायरेक्ट हीट प्रोड्यूस तो 2 एम्पीयर के बराबर ही होगी ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो हीट प्रोड्यूस पे फर्क नहीं डालता। ओके, लेट मी हैव अनदर वेरिएशन। एक इस तरह का ग्राफ है आपके पास। समझ आई बात क्या आपको? ये वेरिएशन करंट टाइम 5 amperes 0 T by 2 T and so on। He says find the RMS value of current। He can also ask you to determine the RMS value of current for a certain time interval. But if he has not asked, then it means it is to be determined for 1 cycle. I will do the same thing. I will first of all determine the actual heat being produced. This is 5 का square into R into T by 2 plus 0। यहाँ पे करंट 0। अरे बहुत बढ़िया चीज है। Let IV be that constant current which produces the same amount of heat in the same time। IV कितना आ गया? 5 by 2। आप कहोगे सर ये तो वैसा ही आ गया। पर हमेशा जो RMS वैल्यू है वो I0 by root 2 नहीं होती, सिर्फ साइनोसॉइडल वेरिएशन की। कॉस हो तो भी वही है। सो पता लगा कि कैसी भी वेरिएशन दी हो, जितने टाइम के लिए उसने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछी है, आप उतने टाइम में निकाल लो। एक और, that is one of my favorites। He says the current is varying as
is equal to I naught t by tau. Obviously, tau has dimensions of time. Find the root mean square value of current from 0 to tau. He's specifying it. Find RMS value from t is equal to 0 to t is equal to tau. अब इंटीग्रल करना पड़ेगा. Actual amount of heat produced, I square R dH, I square R dt, H, I naught square R upon tau square into t square dt का इंटीग्रल from 0 to tau. अपने आप करके देख लेना. I square, I naught square, t square upon tau square, R into dt from 0 to tau. अपने आप करो जरा, देखो मैं. ये हमारे पास हीट प्रोड्यूस आ गई. I naught square R upon tau square, t square upon 3. Limits लगाओगे, it will be tau square upon 3. T cube upon 3 rather. This will be tau cube upon 3. ये कट गया, ये कट गया, और ये actual amount of heat produced आ गई. I naught square R tau by 3. This is the actual amount of heat being produced by this current variation for this time interval. Now, if IV is that constant value of current which produces the same heat in the same time, तो वो होगा जी IV square R tau is equal to I naught square R tau by 3. R tau, thus giving me IV to be I naught upon root 3. Conceptually आपको RMS value of current निकालनी आनी चाहिए. एक और वो बहुत इंटरेस्टिंग वेरिएशन. 1, 2, 3, 4, 5 में in that we have a combination of a DC. कहता है कि DC की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी है? यार यही बात होगी ना. If something is moving with uniform speed, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी? Exactly यही बात पूछ रही. If you have a DC of say 5 amperes, RMS वैल्यू कितनी? 5 amperes. I hope you are able to correlate it, ना? ये एक वेरिएशन है. I is equal to I1 plus I2 sin omega. I1 is DC and we have I2 sin omega t as a sinusoidal variation. He says इसकी RMS वैल्यू निकालनी है 0 to t 1 cycle के लिए. Yeah, first of all we will determine the actual amount of heat being produced in one cycle. I1 square RT. इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है. अगर मेरे पास सिर्फ यही वेरिएशन होती तो I2 sin ओमेगा t की RMS वैल्यू कितनी है? I2 upon the root 2. I2 upon the root 2. This is that constant value of current which produces the same amount of heat as
as is actually being produced by this variation, I square R T. This is the actual amount of heat being produced by this variation here. Solve करें इसको कितना आता है? This is I1 square RT plus I2 square by 2 RT. And let IV be that constant value of current which produces the same amount of heat in the same time. तो ये कट आ गया, बहुत अच्छा लगता है। तो IV कितना आया मेरे पास? I1 square plus I2 square by 2 ये आएगी मेरे पास बात I1 square plus I2 square by 2 under the root या I2 by root 2 का whole square, whatever। ठीक किया मैंने मेरे फिर वो गलती कर देता हूं मैं ऐसे यहाँ पे I1 square plus I2 square by 2 या I2 by root 2 का whole square, कुछ भी। very interesting please। This is the way we determine the root mean square value of current. Today I'm going to do with you something। यार मैं ना बच्चों के बगैर बोल सा हो रहा हूँ, मैं अब सैर करता रहता हूँ जैसे पहले सैर करता था। Today what we are going to do with you here is that how does a resistor, inductor or a capacitor behaves to a AC supply। कि अगर सर्किट में रेजिस्टर लगा हो, इंडक्टर लगा हो, कैपेसिटर लगा हो, उनका बिहेवियर कैसा है टू अ सप्लाई। लेट मी वंस अगेन, बहुत बारी बोल चुका हूं ये, पर इंपॉर्टेंट बहुत है। लेट अस रिमेंबर द बिहेवियर ऑफ a resistor, inductor and a capacitor to a DC supply। उसमें एक t is equal to 0 स्टेज थी, एक ट्रांजिएंट स्टेज थी और एक स्टेडी स्टेज थी। रेजिस्टर लगा दो, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। इंडक्टर लगाओगे क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ रेजिस्टर की नेचर पता क्या है? The collisions of the electrons amongst themselves and with the atoms and ions of the material. This is the nature of resistance being offered by a resistor। An inductor connected to a DC supply, वो पता है कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करता है? वो अपोज करता है, उसके अंदर से करंट या फील्ड या फ्लक्स ग्रो करती है तो वो उसको ग्रो करने को रोकता है। अगर उसमें से करंट, फील्ड या फ्लक्स डिक्रीज होने की कोशिश करती है तो वो उसको रोकते हैं। The resistance being offered by an inductor is of the self-induced opposing EMF kind। वो भी तो एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस तो रुकावट होती है, चाहे इक्वेशन से हो जाए, और इंडक्टर कैसे करता है? वो अपोज करता है। That is why an inductor connected to a DC supply, just when the key is pressed, it offers infinite resistance, and in the steady state it offers you zero resistance। An ideal inductor का resistive effect कुछ ना कुछ जरूर होता है। क्यों? Because it is made up of a wire। Let's come to a capacitor। एक कैपेसिटर जो है वो t is equal to 0 पे zero resistance ऑफर करता है। For this we have to understand the nature of the resistance offered by a capacitor। A capacitor offers resistance because of the charge present on the capacitor। वो और चार्ज को आने को रोकता है। Let's understand the physical process behind it। और जब वो कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है तो वो और चार्ज रिसीव नहीं करता। That is why t is equal to 0 पे when the key is just pressed it offers zero resistance, and in the steady state it offers infinite resistance। उल्टा है इंडक्टर से। कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड है, वो जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है वो और चार्ज को होने को रोकता है।
This is the nature of, we're going to get into quite a lot of mathematics here, but we need to understand the physical process behind it. What is happening? Resistance offered by an inductor, मतलब क्या है? Resistance offered by a capacitor, मतलब क्या है? Let us see that when we connect these devices to an AC supply, तो क्या होता है? And we will arrive at it for a sinusoidal variation. E is equal to E naught sin omega t. वोल्टेज वेरी कर रही है 0 to E naught to 0 to minus E naught to 0 in one cycle. And for a frequency of 50 Hertz, there are 50 such cycles in 1 second. Just imagine. It means the peak value of voltage will occur 100 times in 1 second. यह वो 1 cycle है. 50 Hertz मतलब 50 cycles per second. तो करंट भी वेरी करेगा. Let us see. Before we really start this, let us define AC through a resistor. Look. AC through a pure resistor. आज मैंने आपको 3 डिवाइसेस करवाने हैं, राइट? This is a resistor. This is an AC supply. Sinusoidal variation. Resistance R, which depends upon nature of material, absolute temperature, length, and cross-sectional area. The supply has a voltage of E is equal to E naught sin omega t. Current I is equal to E by R. E naught by R sin omega t. This is its peak value, which will happen at t is equal to t by 4. और I is equal to I naught sin omega t. मतलब पता क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर वोल्टेज इस तरह वेरी कर रही है तो करंट भी बिल्कुल इसी तरह वेरी करेगा. वोल्टेज एंड करंट, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन आएगा. वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज. फेज. फेज क्या होता है? जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिटरमिन करता है. तो वोल्टेज एंड करंट आर द सेम फेज. T is equal to 0 पे वोल्टेज 0, T is equal to 0 पे करंट भी 0, T equal to T by 4 पे वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट भी मैक्सिमम है. साथ साथ चल रहे हैं. वोल्टेज एंड करंट are in the same phase. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये फेजर बनाऊं, फेजर में अभी ग्राफ बनाते हैं. ये ग्राफ में मैं E और I दोनों रिप्रेजेंट करूंगा. दिस इज T by 4, दिस इज T by 2, दिस इज 3T by 4 and this is T. ये है ये वोल्टेज की रिप्रेजेंटेशन. ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और ये रही पीक वैल्यू ऑफ करंट. ज्यादा को दिखाइए यार, कम भी दिखा सकते हो, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा. ये रहा आपके पास माइनस ई नॉट और ये रहा आपके पास माइनस. ये वेरिएशन ऐसे चलेगी कुछ. ठीक है जी, अपने हाथ से बना.
ये we use a different color है। ये वेरिएशन कुछ इस तरह चलेगी। Beautifully shown. Voltage and current are in the same phase. इसका मतलब क्या है? This means के जिस इंस्टेंट पे वोल्टेज जीरो है उसी इंस्टेंट पे करंट जीरो है। जिस इंस्टेंट पे वोल्टेज मैक्सिमम है उस इंस्टेंट पे करंट भी मैक्सिमम है। और फिर जब दोबारा वो जीरो हो जाएगी तब फिर वो दोबारा जीरो आ जाएगी। Thus voltage and current would be in the same phase. We have another thing which is called a phasor. Phasor सिर्फ resistor में नहीं, it's a general term, phasor. Alternating quantities अपने आप लिख लोगे? Alternating quantities such as voltage and current are represented by phasors. A phasor revolves in the anti-clockwise sense. A phasor revolves in the anti-clockwise sense. The length of the phasor denotes the peak value of the alternating quantity and its projection denotes the instantaneous value. The angle it makes with the positive direction of x-axis denotes its phase. एक बार लिखो फिर दोबारा इसको। Alternating quantities मतलब मेरा स्केल देखेंगे क्या है? स्केल देखेंगे थी बुक्स में हमें। Alternating quantities such as voltage and current are represented by phasors. A phasor revolves in the anti-clockwise sense. The length of the phasor will denote the peak value. Its projection on y-axis लिख सकते हो। Its projection on y-axis denotes the instantaneous value, and the angle it makes with the positive direction of x-axis will denote its phase. देखो, ये हमने फेजर बनाया। ये बनाया हमने, कहीं भी बना सकते हो, ये बनाया हमने वोल्टेज फेजर
फेज फाई है उसका, और ये बनाया हमने इसके साथ ही करंट फेजर। ठीक है, both are in the same phase। लो ये ब्लैक से डिनोट करते हैं। This denotes E naught and this denotes I naught। ये इसकी प्रोजेक्शन, जब ये यहां होगा ये इस तरह घूमता है, जब यहां से यहां आ गया the phase changes by pi by 2 radians। What does it physically mean? That the current has varied from 0 to I naught। ठीक है, जब ये रेड वेक्टर देखो, एक्चुअली ना वेक्टर बोला गया है, फेजर है, ये यहां पे आ गया, इसकी वजह ये कम है, ये जितना घूमी जाता है ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है E, और ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, sorry, ये I है, this is E and this here is I। A phasor revolves in the anti-clockwise sense। We say that the phase of voltage is changed by pi radians। It means ये phasor यहाँ से यहाँ चला गया। It means अगर पहले वोल्टेज 0 थी अब फिर 0, अगर यहाँ पे है T इक्वल टू 0 पे ये आ गया E से प्लस, E से माइनस E आ गया, एंड सो ऑन। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। एक और बात हम स्टडी करते हैं कि द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय R and does not vary with the frequency। The resistance of the resistor is independent of the frequency and it depends upon geometric factors, nature of material। ये पुराने हैं, and absolute temperature। If the frequency of the supply is 50 hertz, the resistance offered would be R। If the frequency of the supply is 100 hertz, the resistance offered would still be R, right? Voltage and current are in the same phase। यही कुछ हमने आज इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए करना है, और फिजिकल एस्पेक्ट समझना है ये हो क्या रहा है। बेटा ये कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप्स मैथ्स के किए ताकि हमें बात समझ में आ जाए। इंडक्टर और कैपेसिटर में भी ऐसे ही है, इंडिपेंडेंट डेरिवेशन नहीं आएगी, रिजल्ट ही आएगा। पर जिस तरह हम पढ़ते हैं हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये क्या हो रहा है। AC थ्रू अ प्योर इंडक्टर, बड़ा ही इंटरेस्ट है। AC थ्रू अ प्योर इंडक्टर। यार प्योर इंडक्टर नहीं होता, क्यों नहीं होता? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अ वायर। बट व्हाइल स्टडिंग द इफेक्ट वी विल स्टडी इट्स इंडक्टिव इफेक्ट ओनली। द रेजिस्टिव इफेक्ट of a pure inductor is zero. An inductor offers a certain resistance
रेजिस्टिव इफेक्ट मतलब उसका रेजिस्टर वाला इफेक्ट निग्लेक्ट कर रहे हैं हम। रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा। इंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसा होता है? द सेल्फ इंड्यूस्ड अपोजिंग ईएमएफ काइंड। इवन बिफोर डूइंग द डेरिवेशन, इवन बिफोर अराइविंग एट द रिजल्ट, हमें पता है कि t इक्वल टू 0 पे ये एकदम अपोज करता है और स्टेडी स्टेट में अपोज ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि t इक्वल टू 0 पे उसमें पहले करंट नहीं होता, एकदम करंट इंक्रीज होने की कोशिश करता है, अपोज करता है। वंस द करंट बिकम द कांस्टेंट, हम डिक्रीज करते हैं, फिर अपोज करता है। इट मींस इंडक्टर हमेशा तब अपोज करेगा जब इसमें करंट वेरी करेगा। यार एसी सप्लाई में तो करंट कंटिन्यूसली वेरी करेगा। एसी सप्लाई में देयर इज नो सच थिंग एज t इज इक्वल टू 0 और अ ट्रांजिएंट स्टेज और अ स्टेडी स्टेट। हमेशा ही अपोज करता रहेगा, कंटिन्यूसली अपोज करता रहेगा। कभी करंट इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो अपोज करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा तो अपोज करेगा, उल्टी डायरेक्शन में इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो अपोज करेगा, फिर डिक्रीज करने की, फिर अपोज करेगा, कंटिन्यूसली अपोज करेगा। Thus, an inductor definitely offers a certain resistance to an AC supply, and its resistance is always of the opposing, self-induced opposing EMF kind. Let's do the mathematics now. ये मेरे पास एक प्योर इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L। जो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? ज्योमेट्रिक फैक्टर्स पे। It depends, it does not depend upon the nature of material of the wire, it depends upon the nature of material of its core। एयर कोर है कि उसके अंदर आपने कोई आयरन रॉड डाली है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। सेल्फ इंडक्टेंस, ये हमने इसको एक एसी सप्लाई के साथ लगा दिया और एसी सप्लाई है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इसकी वेरिएशन मुझे मालूम है ना। E सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है माइनस L डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। नेट ईएमएफ इज करंट इनटू रेजिस्टिव इफेक्ट। रेजिस्टिव इफेक्ट इसका नहीं आइडिया। और E नॉट E इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। और डी आई इज E नॉट बाई L इंटू साइन ओमेगा टी डी टी। और integral of di is equal to E naught by L into integral of sine omega t dt. Indefinitely रहने दो। I is equal to E naught upon L. Integral of sine omega t is minus cos omega t upon differential of omega t, which is omega. I is equal to minus E naught upon omega L into sine of pi by 2 minus omega t। sin 90 minus theta is cos theta। अब देखो क्या करना है। I is equal to minus E naught by omega L into sine of minus omega t प्लस, मैंने ना माइनस कॉमन लेना बीच में से, तो माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे? इसकी कोई जरूरत नहीं है, दोबारा लिखता हूं। माइनस कॉमन लेना, साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। कोई फर्क तो नहीं पड़ा? चेक करो। माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये बाहर आ जाएगा, ये कट आ जाएगा। आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और आई, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू।
I naught sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। लो जी, ये चीज याद होनी चाहिए, ये कि अगर मेरे पास एक इंडक्टर है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस L है and it is connected to an AC supply E is equal to E naught sin omega t, then the current in it varies as I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2। I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2। This means current and voltage are not in the same phase। कौन आगे है जनाब? वोल्टेज आगे है। T is equal to 0 पे E 0, T is equal to 0 पुट करें, sin of minus pi by 2 is minus sin 90 minus 1 minus sin naught है। तो जब वो 0 है आप बोलोगे कि अभी तो करंट आपने ऑन ही किया। ओ जनाब, T is equal to 0 is not the instant when we just start, it is the instant when we begin to observe कि ऑलरेडी है। जब वोल्टेज की वेरिएशन में वोल्टेज 0 है, करंट नेगेटिव है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज ऑफ पाई बाय 2, जो हम कह सकते हैं द वोल्टेज इज अहेड ऑफ द करंट बाय अ फेज ऑफ पाई बाय 2। क्लियरली the current lags behind the voltage by a phase of pi by 2 radians। ग्राफ बनाए, both E and I are represented here। ये रहा, ये रहा T by 4, T by 2, 3T by 4 this is I naught minus I naught E naught minus E। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये तो है कि वोल्टेज की वेरिएशन, ठीक है। ये ये है कि वोल्टेज की वेरिएशन, करंट की वेरिएशन। या T is equal to 0 पुट करो, ये माइनस I naught आएगा। T by 4 पुट करो, वो 0 आ जाएगा। करके देख लो, करके दिखाओ करके। ये ओमेगा T by 4 माइनस पाई बाय 2, ओमेगा T is 2 pi by 4 माइनस पाई। ये आ गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, 0 आ गया, साइन 0 0 आ गया। करके देखो, और यहां पे ये लैग बिहाइंड करता है यार पाई बाय 2 रेडियन से। पाई बाय 2 रेडियन का मतलब अ टाइम लैग ऑफ T by 4। ये यहां पे आ जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा। कोसाइन कर्व है ए, देखो कितनी अच्छी कर्व बनाई। एक इधर से ऐसे है, इधर से ऐसे है, और चलो मैं नाइफ मंगा लूं। इट्स अ कर्व। ब्यूटिफुली रिप्रेजेंटेड द
This means that zero or peak values of voltage will occur a time t/4 earlier, because a time lag of pi/2 radians means a phase lag of pi/2 radians. A phase lag of pi/2 radian means a time lag of t/4 seconds. Very very इंटरेस्टिंग. फेज को टाइम से रिलेट करते हैं. न्यूमेरिकल आएगा. फेजर बनाते हैं. फेजर बनाएंगे तो ये वोल्टेज फेजर में यही रखता हूं. E naught, I do it with red, sorry. E naught, and this is its instantaneous current phasor. लैग में हैंड करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे यहां पर बड़ा बनाया क्योंकि ग्राफ में आई नॉट और ये एंगल 90 है. दोनों वेरी कर रहे हैं. पेपर पे रिप्रेजेंटेशन कैसे है? दोनों घूम रहे हैं. ये इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये इनका फेज है. दोनों घूम रहे हैं. दोनों का फेज बदल रहा है, मतलब दोनों की वैल्यूज भी बदल रही हैं कंटिन्यूसली और डायरेक्शन बदल रही है पीरियोडिकली. दोनों की वैल्यूज बदल रही हैं. वोल्टेज भी वेरी कर रही है, करंट भी वेरी कर रहा है, पर दोनों में जो फेज डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. एक और चीज डिस्कस कर लेंगे. ये मिटा देता हूं. आई नॉट कितना इस इक्वेशन से देखो. आई नॉट कितना वी हैव आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल. This means omega L has dimensions of resistance. E naught upon XL, where XL equal to omega L equal to 2 pi nu L is the resistance offered. बड़े अच्छे नोट से बेटे. is the resistance offered by an AC supply, the resistance offered by an inductor to an AC supply, and is called inductive reactance. And is called, नया नाम आ गया जी, inductive reactance. सो बार बार जो हम इसका बोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसकी नेचर क्या है? सेल्फ इंड्यूस्ड अपोजिंग ईएमएफ काइंड. उसका नाम दे दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस. रिएक्टेंस नाम क्यों दिया? यार रिएक्ट करता, क्या मतलब? करंट ग्रो करता है तो कहता है वापस जाओ, डिक्रीज होने लगता है तो कहता है मैं बढ़ाऊंगा, उल्टी डायरेक्शन में जाता है फिर अपोज करता है, हमेशा अपोज करता है, रिएक्ट करता है.
इंडक्टर क्या रिएक्ट करना, यही एक रेजिस्टेंस है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस. द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू एन AC supply is called inductive reactance. And apart from depending upon the self-inductance, which depends upon the material of its core, number of turns, cross-sectional area, length, apart from depending on that, it depends upon the frequency of the supply. जितनी frequency ज़्यादा होगी, या सोच के देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो जल्दी जल्दी करंट बदलेगा, di/dt ज्यादा होगा. फिजिकली समझो तो वो डायरेक्टली आ गया कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उतना ही एक्सएल ज्यादा है. रेजिस्टेंस पर वही इंडक्टर, द सेम इंडक्टर, इफ आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, द इंडक्टिव रिएक्टेंस विल इंक्रीज. एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्यों? Because of higher rate of change of flux. कोई जरूरी भी नहीं है इतना लिखना. मैं जरा फिजिकल एस्पेक्ट में ज्यादा जाता हूं. ये आपके पास एक्सेल है, ये आपके पास न्यू है, और ये रहा आपके पास इसका ग्राफ सीधा. Graphical representation of AC through a pure inductor, variation of voltage and current shown simultaneously on the graph, of phasor representation, and the variation of inductive reactance with frequency. अच्छा, नोट डालो यार, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0. उसकी फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं, वो चेंज ही नहीं करता. देयर इज अ स्माइल ऑन योर फेस. आई होप सो. इट शुड बी. दिमाग में नहीं आता ना. तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है, तो एक्सएल कितना है? ये 0 है. एक्सएल कितना है? 0. दैट इज व्हाई एन इंडक्टर ऑफर्स अ फ्री पैसेज टू डीसी. आखिर में नोट डाल के लिखिए. आखिर में यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, आखिर में यहाँ पे एक नोट डाल के लिखिए. क्या लिखेंगे? फॉर अ डीसी सप्लाई न्यू इज 0. Therefore, XL for DC is 0. An inductor offers a free passage to DC in the steady state. यही सारा कुछ हमने अब कैपेसिटर के लिए करना है. फिर बस रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, यही सारा कुछ हमने कैपेसिटर के लिए करना है. आई होप यहां से ये समझ आ गया. T=0 पुट करो, T/4 पुट करो, T/2 पुट करो, 3T/4 पुट करो, T पुट करो, जैसे ओमेगा T, 1 फुल साइकिल ओमेगा T कितना हो गया? 2π. 2π - π/2, 2π - π/2, 3π/2. 3π/2 को डिग्री में कन्वर्ट करो या सीधा फंडामेंटल लिख दो. तो फेज लैग ऑफ π/2 means a time lag of T/4. अच्छा, एक और बात भी लिख सकते हो, a time lag of T/4, which means, देखो बातें बहुत हैं, which means ये यहां पे that the peak value of voltage will occur T/4 seconds earlier for a frequency of 50 Hertz. T/4 equals 1/200 seconds, which is 0.005 seconds. हाय हाय हाय, मतलब क्या है जनाब? फेज लैग ऑफ, अगर वहां जगह है वहां लिख लो, नहीं तो लास्ट में लिख सकते हो. कहता फेज लैग ऑफ π/2 रीडिंग्स का मतलब क्या है? कहता कौन आ गया? कहता वोल्टेज
voltage. Voltage is ahead of the current by a phase of pi by 2 radians. This means that the peak value of voltage will occur t by 4 seconds earlier. T, time period, 1 by frequency. T by 4 for a frequency of 50 hertz. For a frequency of 50 hertz, it will occur t by 4 यानी कि 1 by 200 seconds. That is 0.005 seconds earlier. इतना ही लैग होता है. ऐसे थोड़ी है ये अब ऐसे है अब ऐसे. फॉर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है. फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो 0.005 सेकेंड्स पहले आएगी वोल्टेज की वैल्यू, फिर जीरो आ जाएगी. हर 0.005 सेकेंड्स के बाद करंट की वैल्यू बाद में आएगी. वोल्टेज अहेड है, करंट पीछे है, अपोज करता है, उससे लैग आ जाता है. लॉजिक AC through a pure capacitor. AC through a pure capacitor. AC through a pure capacitor. जो कैपेसिटर है उसका रेजिस्टेंस ऑफर कैसा होता है? द चार्ज कैपेसिटर प्लेट्स पे ऑलरेडी होता है ना, वो ऑनकमिंग इनकमिंग चार्ज को रोकता है. तो T इज इक्वल टू 0 पे DC पे 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है, फिर रेजिस्टेंस ऑफर इंक्रीज हो ही जाता है और स्टेडी स्टेट में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है. AC सप्लाई के साथ लगा देंगे तो क्या होगा जनाब? वो कंप्लीटली कभी चार्ज होगा ही नहीं, हमेशा अपोज ही करता रहेगा, रिएक्ट करेगा. वो उल्टी डायरेक्शन से चार्ज होने लग जाता है, उधर से करेगा, थोड़ा सा फेज लैग आ जाएगा. चार्ज जब होगा तो वो अपोज करेगा, वो सप्लाई की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो उल्टी डायरेक्शन से चार्ज करने की कोशिश करेगा, वो उधर से अपोज करने लग जाएगा और हमेशा एक कंटिन्यूस ऑपोजिशन रहेगी. एंड कैपेसिटर की जो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है, इट विल बी कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ये भी रिएक्ट करता है. AC थ्रू अ प्योर कैपेसिटर. मैंने ज्यादा बोला, एक्सप्लेनेशन ज्यादा, नोट्स बनाओगे फटाफट बन जाएगा. ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है. ये भी किस पे डिपेंड करती है? कैपेसिटर प्लेट्स के नेचर ऑफ मटेरियल पे नहीं करती. यहाँ क्या एयर है, ग्लास है, माइक है, कॉपर है, कंडक्टर है कि डाइइलेक्ट्रिक है, रिमेंबर उस पर डिपेंड करती है. ज्योमेट्रिक फैक्टर्स पे करती है और नेचर ऑफ द मीडियम पे करती है. इस पे हमने एक सप्लाई लगा. सप्लाई है कि E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t. Instantaneous charge on the plates, on the capacitor plates. Q is equal to E by C. इंस्टेंटेनियसली जो वैल्यू होगी, E क्या है जी? E0 sin ओमेगा t. डिफरेंशिएट करें, d by dt of Q, मेरे को करंट चाहिए, E0 by C d by dt of sin omega t. Current E0 by C in differential of sin omega t is cos omega t
into omega cos omega t। यार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? Q is E into C, Q is C। गलती, लो ये दोबारा कर। Q is C into Q is E into C is equal to C E not sin omega dq। Q is equal to, यार क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? dq इंटीग्रल करंट, ये डिफरेंशिएट करते होते हैं, आप निकालो और आपने dq is equal to q is equal to e into c। अब डिफरेंशिएट करें, ये इंस्टेंटेनियस चार्ज, सॉरी इंस्टेंटेनियस चार्ज पूरा चार्ज थोड़ी होगा। q is equal to e into c, बिल्कुल। अब डिफरेंशिएट d by dt of q is equal to c e naught into d by dt of sin omega I is equal to c e naught। Differential of sin omega t is cos omega t into differential of omega t which is omega। I आ गया e naught upon 1 by omega c। जान के लिखते हैं ऐसे, जो ओमेगा c है वो e naught upon 1 by omega c, omega c into sin of 90 plus or I is equal to I naught, this is the peak value, sin function की value जब 1 होती है, I naught sin pi by 2 plus ये करंट है, ये आपके पास वोल्टेज है, वोल्टेज एंड करंट। करंट इज ahead of the voltage by a phase of pi by 2, या voltage lags behind the current by a phase of pi by 2। Clearly the current is ahead of the voltage by a phase of pi by 2 radians। क्या मतलब है इस बात का? This is a time lag of t by 4 seconds। This means that peak value of current will occur a time t by 4 earlier, and for a frequency of 50 hertz it will occur 1 by 4 nu is equal to 1 by, ठीक है 1 by 200 seconds equal to 0.005 seconds earlier। मतलब क्या है ये फेज लैग का? कि भाई करंट इज ahead of the voltage by a phase of pi by 2 radians। मतलब क्या है? pi by 2 radians time lag of t by 4 seconds, which means that the peak value of current will occur t by 4 seconds earlier, and for a frequency
frequency of 50 hertz, हिंदुस्तान की कसम, it will occur 1/4 nanoseconds or 1/200 seconds or 0.005 seconds earlier. क्या बात है ये? Please try to understand the meaning of phase. Graphical representation. Logic. E. I. 0. T/4. T/2. 3T/4. T. E0 minus E0. ये E0 sin omega t है, ये फ्री हैंड है करंट, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है आई नॉट, ये यहां माइनस करंट इज अहेड ऑफ द वोल्टेज, t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो sin π/2 आएगा यहां, ठीक है जी। ये करंट जो है वो हमारे पास पीक है। अब इस वक्त ये 0, ये यहां आ जाएगा, ये फिर यहां आ जाएगा। करंट की वैल्यू हमेशा पहले आएगी, ये 0 आ गई, ये T/4 बाद में आएगी। इट्स अ कर्व, ऐसे नहीं ड्रॉ करना ग्राफ, इट्स अ कर्व। The peak values of current will always come T/4 seconds earlier. Phasor, ये ग्राफ है, फेजर कैसे बनाएंगे जी? ये बना दिया जी वोल्टेज फेजर, करंट फेजर कहां बनाएंगे? यहां बनाएंगे, ये बना दी I0 और ये आई इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अच्छा रेड से बनाते हैं, चलो आज तो बोर्ड मैंने रंग बिरंगा कर दिया, अभी ऑप्टिक्स में और इंटरेस्टिंग आएगा। ये और ये नहीं, दोनों घूम रहे हैं, दोनों घूम रहे हैं। घूमने का मतलब वेरी कर रहे हैं। टाइम T/4, फेज लैग π/2, दोनों का फेज बदल रहा है पर दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है π/2 रेडियंस। लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। द पीक वैल्यू ऑफ करंट peak value of current is I0 is equal to E0 upon 1/omega c. E0 upon resistance, clearly 1 by ऐसे better representation है, E0 upon xc, where ऐसे किया था ना पिछली बार भी, where xc is equal to 1/omega c is the resistance offered
by a capacitor to an AC supply and is called capacitive reactance and is called capacitive reactance. ये भी रिएक्ट करता है। अभी बताओ ये सारा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर। कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर कैसे करता है? बहुत बारी बोल दिया आज, जो कि चार्ज ऑलरेडी उस पे है, यार पूरा चार्ज होता ही नहीं, स्टेडी स्टेट आती ही नहीं, रिएक्ट ही करता रहता है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा। क्यों? यार इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मुझे भी नजर आ रही है, बताओ क्यों? फ्रीक्वेंसी का मतलब है सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कम है, खासा चार्ज हो जाता है जब वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो वो ज्यादा चार्ज हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एक्सी कम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम है, क्योंकि बहुत कम चार्ज होगा और डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। XC is equal to 1 by omega C is equal to 1 by 2 pi nu C। इसका मतलब है कि जो ग्राफ आएगा हमारे पास बिटवीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी, वो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का है। हैरान मत हो, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, +1 से याद होना चाहिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ कर्व्ड है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है तो भी कर्व्ड है। रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने v का भी बनाया था, e का भी बनाया था। e वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, v वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। याद आई, वो एक दूसरे को काट देते हैं बीच में। एनीवे, सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फॉर अ डीसी सप्लाई, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। नोट डाल के लिख सकते हो जी लास्ट में, नोट फॉर अ डीसी सप्लाई, फॉर अ डीसी nu is 0, therefore in the steady state XC for DC is infinite. A capacitor blocks DC in the steady state. An inductor offers a free passage to DC in the steady state. और दोनों ही AC सप्लाई को एक कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बहुत बोला हूं मैं आज, बस करता हूं। बॉयज एंड गर्ल्स, we've had a wonderful lecture. You've come to know the behavior of a resistor, inductor and a capacitor for an AC supply and their physical processes, their graphs and their phasors. ये डायरेक्टली नहीं पूछेंगे आपसे कि डिराइव करो, ये छोटी बातें ये पता होना चाहिए। Tomorrow we will join the 3 in series. Shabba khair. Have a pleasant day. Bye bye.